अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एम टू टीच, जहां मैं आपको टीच करूंगी और ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लेने की कोशिश करूंगी। टुडे विल टॉक अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच, सो लेट्स स्टार्ट। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच: वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रोनाउन, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन, preposition. Let's talk about verb in detail. A word that describes action or state in a sentence is a verb. ऐसा वर्ड जो किसी एक्शन या स्टेट को किसी सेंटेंस में बयान करता है वो वर्ब कहलाता है। उर्दू में वर्ब को फेल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रन, स्विम, जंप, स्माइल, प्ले, etc. Let's use verb in the sentences. Sara plays football. In this sentence, plays यानी खेलना is verb. I buy a book for you. In this sentence, buy यानी खरीदना is verb. Move on to the next, which is noun. A name of a person, place or a thing is noun. किसी भी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को noun यानी इसम कहा जाता है. For example, आमना, cat, Lahore, mat, etc. Let's use nouns in the sentences. The dog ran very fast. In this sentence, dog is a noun. Asma works in a school. In this sentence, Asma and school is noun. Move on to the next one. Adjective. A word that modifies or describes a noun or pronoun. उर्दू में adjective को इसमें सिफ्त कहा जाता है। ऐसा लफ्ज़ जो किसी भी इसम या इसमें ज़मीर की अच्छाई या बुराई को बयान करता है वो इसमें सिफ्त यानी एडजेक्टिव कहलाता है। For example, huge, red, angry, happy, etc. Let's use adjectives in the sentences. He is a fast driver. In this sentence, fast is adjective. We had a difficult test today. In this sentence, difficult is adjective. She is a pretty girl. In this sentence, pretty is adjective. Next one is adverb. A word that describes a verb, adjective or an adverb. The adverb tells us how often, how, when or where. उर्दू में adverb को मुतल्लिक फ़ेल कहा जाता है। ये ऐसे अल्फाज होते हैं जो फ़ेल इसमें सिर्फ या किसी दूसरे मुतल्लिक फ़ेल को बयान करते हैं। For example, quickly, gently, yesterday, extremely, etc. Let's use adverbs in the sentences. She spoke softly. In this sentence, spoke is verb and softly is adverb. She dances weirdly. In this sentence, weirdly is adverb that describe the verb dance. I'll see you tomorrow. In this sentence, tomorrow is adverb. Go downstairs. In this sentence, downstairs is adverb. Next one is pronoun. A word that is used instead of a noun. उर्दू में प्रोनाउन को इसमें ज़मीर कहा जाता है और ये वो लफ्ज़ होता है जो किसी भी इसम की जगह पर यानी नाउन की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही, शी, इट, आई, वी, herself, they, etc. Let's use pronouns in the sentences. I have a cat, it is black. In this sentence, it is pronoun. This is mine dog. In this sentence, mine is pronoun. You should clean the room yourself. In this sentence, yourself is pronoun. Next one is interjection. A word that expresses spontaneous feeling or emotion and often followed by exclamation mark. उर्दू में interjection को हर्फ़े निदा कहा जाता है। ये ऐसे अल्फाज होते हैं जो जज्बात और एहसासात का बेसाख्ता इजहार करते हैं। इनके आगे हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। फॉर एग्जाम्पल, वाओ, आउच, हुर्रा, ब्रावो। लेट्स यूज इंटरजेक्शंस इन द सेंटेंसेस। वाओ, दैट्स अ ग्रेट कार. In this sentence, wow is interjection. Ouch, you are hurting me. In this sentence, ouch is interjection. Oops, I just spilled my coffee. In this sentence, oops is interjection. Move on to the next one, which is conjunction. A word that is used to connect words, phrases and clauses.
उर्दू में कंजंक्शन को हरफ अतफ कहा जाता है, जो कि दो या दो से ज़्यादा लफ्ज़ों या जुमलों को मिलाने का काम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एंड, सो, और, बट, नोर, ईदर, etc. Let's use conjunction in the sentences. Mary went to supermarket and brought oranges. In this sentence, and is conjunction. Do or die. In this sentence, or is conjunction. You can go as long as you are good. In this sentence, as long as is conjunction. Last but not the least is preposition. A word used before a noun or pronoun to describe place, time or direction. Preposition को उर्दू में हरफ जार कहा जाता है। ये ऐसे अल्फाज होते हैं जो अकेले कोई मायने नहीं देते, लेकिन इसम और फेल को आपस में मिलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन, एट, ऑन, ऑफ, टू, बिफोर, आफ्टर, अबव, etc. Let's use preposition in the sentences. He left his phone on the table. In this sentence, on is preposition. My birthday is in August. In this sentence, in is preposition. The brain is located inside the skull. In this sentence, inside is preposition. So these are some parts of speech. Hope so you understand the topic. If you have any question regarding to the topic, you can ask in the comment box. Don't forget to like the video and subscribe my channel for more informative videos. It's me signing off. Bye bye. Take care. Allah Hafiz.